lack of these 4 points make and bring a big blunder in your life. What are these 4 important points actually? Let's discuss, let's understand the entire concept of these 4 points, and that is quotient. Quotient of what? Intelligence. Quotient of what? Socialism. Quotient of what? Emotion. Quotient of what? Adversity, complication, problem. Exactly, we are going to talk about 4Q, and these 4Q are IQ, EQ, SQ, AQ. And these are really very and very important. If you lack in these Qs, actually you bring a big blunder in your life. You actually get a lot of failures in your life. You cannot socialize. You cannot balance your emotion. You cannot work mentally, logically, analytically, spiritually. And this actually creates a big problem in your life and makes you face a lot of challenges or circumstances. वो क्या है 4 चीजें? इन 4 चीजों के बारे में समझते हैं। आपके पास बच्चा है या आप किसी के चच्चा हैं, आपके पास बच्ची है, किसी की आप चच्ची हैं, आपकी उम्र 55 है या 55 है, आप सभी लोगों के लिए ये 4 क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे पास अगर ये क्यू नहीं होता है, इफ वी डोंट हैव दीज क्यूज, तो हम कहीं बिना रोने के लिए रोने लगते हैं, बिना हंसने के लिए हंसने लगते हैं। जहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना रहता है वहां हम दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। किसी से बात करना कैसे है वो हम सही से कर नहीं पाते। और जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जहां हमें एक दृढ़ संकल्प या अच्छा फैसला लेना होता है तो हम ले नहीं पाते। एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू ऑल फेस. Every time we interact, because we train the personality development, we groom and develop the personality of the students, children and young adults as well. When they come, they also say that, sir, my IQ is not working properly. How to develop a great IQ, how to develop a great sense, how to develop a great intelligence, they actually say, and they ask for the help. And then we exactly work upon it and they get transformation and change in their lives. So we are going to discuss about these 4Q. First of all, let's understand about one of the most important IQ. Intelligence quotient, the power of intelligence, the importance of intelligence, the power of analytical, the power of actually logical or logic, the power of thinking, the power of mental aptitude and mental attitude, and actually mental strength we are gonna discuss about in this IQ. This IQ builds you. This IQ takes you to the next level. This IQ strengthens your power of the brain. This IQ gives you the chances, the strength to think, to analyze, to take decision. Exactly, this IQ is all about that. How can we develop this great IQ? To develop a great IQ, we need to understand first of all the description, the definition, the foundation and exact meaning and explanation of this IQ, ladies and gentlemen. This IQ is all about your mental aptitude. So to exercise mental ability, to exercise working upon your mental power, you need to read, you need to explore, you need to visit, you need to actually observe the environment, you need to solve the questions, you need to solve the mathematical, analytical questions, you need to just do something where you can work upon your mind, where you can analyze and check the power and strength of your mind and brain. That's what IQ is actually, right? Every time, for example, if you have kids and you want to make a great IQ in those kids, take them to some kinds of meeting, social gathering, to some kinds of programs, seminars, to some kinds of presentations where they can express themselves and they can also observe and learn a lot of things exactly. Right? Then those kids will actually generate and build a great IQ. Take them to the quiz competition, take them to the competition, take them to examination, take them to the testing, take them for talking, take them for presentation, take them for speeches. Those kids will strengthen and will build a great IQ by doing these activities and sessions.
We need to understand this exactly, right? So what we need to understand, we need to understand, for example, if you have not a proper IQ, what challenges, what circumstances you may face. You may face a lot of things. You may face failure. You may face inferior complexity. You may face embarrassment. You may face social anxiety. You may face social isolation. You may face less connection and interaction. You may face a lot of challenges to connect, to communicate, to network, to actually talk and interact to the people and to answer the proper questions. So this IQ actually balances your EQ. This IQ balances your AQ. This IQ balances your SQ. That's why the most important is actually IQ. So you all need to keep in your mind to develop your mind, and you need to work upon your IQ, ladies and gentlemen. Now let's move to the next word and next abbreviation. This is EQ, emotional quotient. भावना की शक्ति, भावना को कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो वही आपको इमोशन को बैलेंस करना है। कहते हैं ना कि मैं शांत रह के भी क्रांति ला दूंगा, शांति से भी क्रांति ला दूंगा। इमोशन बैलेंस करता हूं बिकॉज आई बैलेंस माई इमोशंस। ऑफन यू सी द पीपल, जैसे आपको मैं औरतों का एग्जांपल्स दूं, किसी के घर में मैयत हुई रहती है, मौत हुई रहती है, औरतें पहले लिपस्टिक पाउडर लगा के एकदम बैग लेके पर्स लेके आराम से आती हैं फोर व्हीलर में, जैसे गेट पर पहुंचती है, अरे मैया, they start crying, they start weeping, they start shouting, oh अरे भैया कैसे चला गया, कैसे चला गया। You know, something happens, it's actually they balance their emotions. कैसे वो इमोशन के साथ खेलती हैं, पहले मुस्कुराती हैं, फिर रोती हैं, फिर उसके बाद रोने के बाद बिरयानी खाती हैं। इमोशन को कैसे बैलेंस करती हैं, दिस इज all about EQ, emotional quotient, emotional balance. And if we don't have this, अगर हमारे पास ये चीज नहीं होती है, तो ये समझ के आप रखिए कि it may bring a lot of problems into your life. It may bring a lot of disturbance into your life. आपको कोई रुलाएगा तो आप रोने लगेंगे, आपको कोई दर्द देगा तो आप तकलीफों में चले जाएंगे, आपको कोई थोड़ा सा सताएगा तो आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आपको कोई थोड़ा सा भी परेशान करेगा तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से नाता और रिश्ता तोड़ने की बात करेंगे। आपसे कोई अगर कुछ कहेगा तो आप उससे रिश्ता तोड़ने और उससे भागने और उसको छोड़ने की बात करेंगे। इसलिए EQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैलेंसिंग योर इनर इमोशन एंड इनर फीलिंग्स। अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की भावना, अपने अंदर के फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए आपको अपने EQ पे मास्टर करना होगा। आप कहीं भी जाइए, देखिए, लोगों को समझिए, आंकिए, आकलन करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये तो बड़ा इमोशनली बड़ा कमजोर है, इमोशनली बहुत अफेक्टेड है, ये तो रो देता है बात बात पर, ये तो बात बात पे जो है कि गुस्सा कर जाता है, बात बात पर मुंह बना लेता है, बात बात पर जो है कि दूर चला जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में होती है वो EQ होते हैं, क्योंकि आपको अपने मन को इतना शांत रखना है, मन को इतना बैलेंस रखना है, अपने इमोशन को इतना स्ट्रांग रखना है कि कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग ना रख दो कि पत्थर दिल कहलाओ ऐ सनम, लेकिन इतना जरूर रखो कि बार बार बात पे तुम्हें रोना ना पड़े मेरे दोस्त। राइट? तो क्योंकि जिंदगियों में चुनौतियां आएंगी, जिंदगियों में कहीं कोई छोड़ जाएगा, कोई रिश्ता तोड़ जाएगा, और कुछ लोग होते हैं कि हाथों की नसों पे चाकू चलाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फांसियों के फंदे को लटकाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि खाना और पीना छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपने रुख को जिंदगी से मोड़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपनी स्टडीज को छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद और नस्तो नाबूद कर देते हैं। सो वट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें क्या समझना है कि ऐ मेरे सनम, तुम आओगे सनम, जाओगे सनम, लेकिन बाद में पछताओगे सनम, क्योंकि हम तो ठहरे परदेसी, हम साथ निभाएंगे, लेकिन हम साथ सबसे पहले साथ अपना निभाएंगे, अपने इमोशन का निभाएंगे, क्योंकि हमारा EQ, आवर EQ इज एक्चुअली स्ट्रांग, मजबूत है।
अगर आप अपने EQ को स्ट्रांग नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप सोचिए कि आज इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, आज इंसान एंजाइटी महसूस कर रहा है, आज इंसान स्ट्रेस में, आज इंसान इरिटेशन में, आज इंसान एंगर में, आज इंसान फ्रस्ट्रेशन में, आज इंसान इरिटेशन में, आज इंसान कहीं ना कहीं जो है कि लेस सोशल, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है। वो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ प्रॉपर EQ, एक इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण, उसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, क्या वो प्रॉब्लम और दुनिया में किसी की जिंदगी में नहीं है? बिल्कुल है। आपके घर में किसी की डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों के घर में किसी की डेथ हुई है। आप आज अपने ब्रेकअप से कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत से लोगों का दुनिया में ब्रेकअप हुआ है। आज आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस की लैक है, फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और जो हट्स झोपड़ी में झुग्गी में रहते हैं, उनके पास कहां से पैसे आते हैं? आप अगर इसलिए रो रहे हैं कि आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं चल रही है, आप एग्जाम्स में फेल हो जा रहे हैं, तो सोचिए कि उन लाखों, उन करोड़ों, 12 लाख लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 1,500 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो उन 11,95,000, 95 नहीं एक्चुअली 98,500 लोगों का क्या होता होगा? उन्हें तो रो रो के अपने माथे को पटक देना चाहिए। बट एक्चुअली यहां पे काम करता है आपका EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में सारी चीजें होती रहेंगी, दुनिया में सब कुछ आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन आपको अपने मजबूत इरादों के साथ डटे रहना होगा। एंड यू हैव टू से दैट आई एम बैलेंस्ड पर्सन, यू हैव टू से दैट आई एम ए स्ट्रांग पर्सन, यू हैव टू से दैट आई एम पावरफुल पर्सन, यू हैव टू से दैट आई एम एन इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन, यू हैव टू से दैट एंड एक्सेप्ट दैट योर इमोशनल क्वोशिएंट इज एक्चुअली स्ट्रांग। देन you can prove to this world, yes, I am a strong person. You have to understand. Let's talk about another point actually, social quotient, right? समाज से कैसे आप इंटरेक्ट करें, कनेक्ट करें, समाज से किस तरीके का जो है कि आपका भाव होना चाहिए, किस तरीके का आपका एक रिश्ता, एक रिलेशन कैसा होना चाहिए, that is must and that is very important to understand. अगर आपका समाज से रिश्ता टूटा, आपका समाज आपसे छूटा, तो आप समझ लीजिए, वो कहते हैं कि दुनिया में जिसको आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो आपको कुछ नहीं बदले में देना चाहता, वही होता है समाज। समाज आपको कुछ देगा नहीं, लेकिन समाज आपसे बहुत कुछ ले लेगा। एंड दैट इज द टफेस्ट पॉइंट एंड टफेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। What happens with us if we are not social? What happens with us if we are not socialized? What happens with us if we are not socially connected? We face a lot of problems. We face self-isolation. We feel loneliness. We feel that we are in anxiety and frustration because we are not connected to anyone in the society, and this gives you a big challenge and a big problem in your life. And that's why you need to keep in mind that you need to somewhere socialize yourself to actually make yourself happy, to make yourself proper, to make yourself connecting, to make yourself a relaxing and chillaxing person and personality. This is what you need to keep in your mind, ladies and gentlemen. So if you are socially connected, अगर आप socially connected है तो सबसे पहले आपका मन चंगा रहेगा, आप खुश रहेंगे। अगर आप सोशली कनेक्टेड हैं तो आपको बहुत से लोगों से सीखने को मिलेगा। आप अगर सोशली कनेक्टेड है तो आपका बिहेवियर सही रहेगा। आप सोशली कनेक्टेड है तो आपका नेचर डेवलप होगा। आप सोशली कनेक्टेड है तो आपकी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट डेवलप होगी। आप सोशली कनेक्टेड है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होगा। आप सोशली कनेक्टेड है तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल, सोशल स्किल्स डेवलप होगी। अगर आप सोशली कनेक्टेड है तो आपको बहुत सारी न्यूज़, बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। और अगर आप सोशली कनेक्टेड है तो आपकी साइकोलॉजिकल पावर बढ़ेगी। अगर आप सोशली कनेक्टेड है तो आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी। अगर आप सोशली कनेक्टेड है तो आपको बहुत से लोगों के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में सीखने और जानने को मिलेगा। और अगर आप सोशली कनेक्टेड है तो इंसान से इंसान की मोहब्बत बढ़ेगी। दैट इज व्हाट सोशल पावर इज. That is what social quotient is all about. You need to actually understand this. This is very important. But sometimes what happens that if we start reading and doing studies, we just ignore this social quotient. We say, okay, I don't need to just connect to the society because what does it give me? Okay, it doesn't give you, I accept it. But the point is that it also snatches away a lot of things if you're not connected with this society. Right.
if you're not connected with the society, if you're not social, you have to face a lot of barriers and barricades in your lives. You have to face a lot of circumstances and doubts in your life. And that's why you need to keep in your mind that yes, be socially connected. Be socially connected, improve yourself, improvise yourself, and learn these social skills and interpersonal skills, because this is one of the most important aspects of life. You have to keep in your mind, ladies and gentlemen. And then let's come to the next point, and the most important point is AQ. AQ is all about adversity quotient. And adversity quotient is actually very important because it empowers you to take decisions. It empowers you to face challenges. It empowers you to face circumstances and problems of the life. Many times what happens that you go bankrupt, you go insolvent. People torture you, people torment you, people actually criticize you, people comment you, people make you cry and weep, but that time your adversity quotient works for you, and that is very important. Adversity quotient, that the power of taking decision, the power of resolving the problems of the life. And problem is the part of life that you can never get rid of the problem. You are walking, problem is there. You are sitting, problem is there. You are thinking, problem is there. You're doing studies, problem is there. Doing job, problem is there. You're doing business, problem is there. You are doing any particular work in your life and there is problem. You can never ignore and get rid of this exact hell problem. So why not develop that skill? Why not develop that power and strength where you can say, yes, let the problems come into my life. I'm standing like a chattan, like a mountain, like a stone, and I will solve all my doubts, problems, crises, challenges of the life. This is what you need to understand. So solve your problem. Learn the technique of solving your problem, resolving your problem. Learn the adversity quotient. Learn the complications quotient. Learn that how to face the difficulties of the life and complications of the life, adversities of the life. And learn to just solve and resolve all the problems from yourself by yourself. Because your life is your choice. You want to live your life as you can. Nobody's there to change your life. So I hope that it was a great lesson. उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें आपके दिमाग में गई होगी और इस बातों का आप पालन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इन बातों को अच्छे से समझेंगे और अपने IQ, EQ, AQ और SQ को स्ट्रांग करेंगे। इन चारों क्यों पे काम करिए और फिर उसके बाद आपका हर क्यों आपका सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।